Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, that's Daily Calls, a show that answers all your stock related queries on the program. In case you're here for the first time, well, the WhatsApp number is on your screen. Send me your queries along with your name, location and your contact details. I'll be happy to address all the queries that you send with our top market experts who join in over the next 45 minutes. We'll be happy to take all your queries. Now, you can also log on to our YouTube channel in case you're watching us through any other social media platform. Go on to YouTube, go to the Business Today channel and go to the Daily Calls Live. Use the comment section there to send me your queries. I'll be happy to address that as well as and when they keep coming with our guests as well. Quickly, let's look at how the markets are trading. We are at a half-time report and of course, you can see the markets have slipped even lower and have slipped below the 25,000 mark as well. 68 points of a decline. There's increased amount of choppiness, 2% higher for the India VIX that's now hovering above 10.7 odd levels at this point, and all the sectors. So it's a broad-based sell-off that you're witnessing. Barring metals, that's actually rallying on the back of copper stocks moving up because copper prices are at an all-time high. And you see a lot of Hind copper kind of stocks that are hovering higher. So barring a 0.5% up move on the metals, rest all of the sectors, Nifty Bank, mid caps, small caps, other sectors, that all have slipped lower in trade. What's hovering higher on the Nifty among stocks? There is metals and there's also defense stocks. BEL is the top mover, 2.5% higher, 405. Hindalco is up by 1.2%. Sun Pharma, Axis Bank, ONGC, these are the top movers in trade. On the lower end, however, Tata Motors, Asian Paints, Trent, Shriram Finance, Dr. Reddy's, TCS, these are all the stocks that are still hovering lower in trade. But let's welcome our guest on board. We have Kush Godasara, who's joining in on the show with us very shortly. But let's quickly actually look at how the markets are shaping up before we go in. Let's also welcome our viewers who are joining in. Let's go and see what's happening on the YouTube. We have a lot of viewers who are joining in early on the show. So welcome to Aarti, welcome Ankur, who's joining in early. We have Vanita. We also have people like Anuj Singh joining in. So welcome to everybody. Thanks a lot for joining in early. We have a lot of viewers' questions coming in on our WhatsApp as well. So stay tuned in, and of course, we're going to be looking at all of these questions of yours. But let's look at the broadest index, what's happening in the Nifty 500 names. TVS Electronics is up by 17%. You have names like Finiotex Chemicals, that's higher. You have State Trading Corporation, that's up by 9%. You have Solara Active Pharma Sciences, that's up by 8 to 9%. You also have names like Inco Elecon, that's up by 7% today. Then apart from that, NetWeb Technologies, which has been an unstoppable stock right from the time the IPO came in. You can see a 5.5% of an up move there. Inox Green Energy is also higher. These are some of the names from within the Nifty 500 basket that are actually in smart momentum in trade, despite the fact that the overall market breadth is turning weak. Kush is with us. Hi Kush, good afternoon to you. Good to have you with us. Tell us what's your sense on the markets. From last 4 sessions, we've been seeing consistent sell-off in the markets and a pressure that's built up that's now led us to slip even below the 25,000 mark. Do you think this trend is going to be weakening further, or do you think this is going to be bought into? What is your suggestion? Sakshi, definitely, I believe, this trend is on a weakening side. I believe, 25250, which was acting as strong resistance, we were not able to close above that same level for consecutive 3 days. So in technical analysis, generally, it's a guideline that when we break above resistance, we need 3 consecutive close. So, it was definitely a fake breakout, we can say a trap. So now today, if we close below 25,000, we are, we will get more confidence for the downside. 24,200 can be your target. Stocks like Reliance, HDFC Bank, ICICI Bank, they are not performing. And today Tata Motors is adding to that list. So I think, overall, still the momentum is on the weaker side. Unless we have some surprise from the trade deal with US, I don't think we are going to see any good momentum on the upside in near term.
Okay, fair point. So the pressure may continue at this point in time. Kush, let's do is that we'll take some questions from our viewers and we'll come back to a wider discussion as well on the markets with you as to how to trade this weakening trend, which are the pockets to identify as bullish pockets and where can you continue to short. So we'll come to all of that. But a lot of viewers are joining in, so let's take some questions there, Kush. First up, Anuj Singh says, good afternoon, ma'am. Good afternoon. कुछ सर हेल्प मी अंडरस्टैंड विद नेटवेब टेक्नोलॉजीज 1722 के रेट पर मैंने 100 शेयर्स लिए हैं, एक साल तक का टारगेट क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बधाई अनुज जी, आपने बहुत ही बढ़िया लेवल पर ये शेयर खरीदे हैं और इस स्टॉक में आज भी 5% तक की ऑलमोस्ट तेज़ी देखने को मिल रही है। 3580 के ऊपर आ चुका है ये शेयर, तो आपको डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक साल तक के लिए और रुकना चाहते हैं कुछ, कैन ही कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू नेटवेब? Yes, definitely. Stock is in strong momentum, and we are seeing a good, rally also. Technically, we are in the overbought zone, so maybe we may get some headwinds, profit bookings on the downside. So yes, fundamentally, I believe you should hold on. But the strategy which I suggest to my clients is always, when you are getting, say, more than 100%, book 50%. You get your capital and invest somewhere else, because now in India, now in our stock market, we every day get some new opportunity. Always we are short of funds to invest. So rather, I would suggest to be safe. Book 50%, so your rest quantity is free of cost, and just forget it. And you can reinvest your capital somewhere else in new opportunity which may arise in coming months. But otherwise, if you want to hold it, keep strict stop loss at 3300. Fair point. Let's take another one. This one is from one of our viewers. Okay, let's take this question coming in from Ankur Modi now, who says, Sakshi, good afternoon. Hope you're doing well. Can I buy Varun beverages at the current levels and also BLS International, if you could suggest to me, current level for the long term is what Ankur's question is. Let's try and understand. Varun beverages currently at 452 and BLS International is also something that he's looking at. We do know that BLS International is into the travel and the tourism space, and this is the season when a lot of winter related travel starts to pick up, festive related travel starts to pick up as well. How are you looking at BLS, which is trading at 351, and Varun Beverages, which is also trading a tad lower in trade today? So starting with Varun Beverages, Sakshi, definitely technically it's looking weak. I believe we may see around 250 to 300 levels. The reason, technically, of course, we are seeing some weakness. Stop loss can be on 470 on the upside. Fundamentally, I believe, now many companies are, moving towards eco-friendly packaging. And secondly, with the hike in GST on cold drinks and liquor, I think Varun Beverages business might hit a bit. So I think sentimentally we will see some correction, and technically we can witness that. So 370 is my target on the downside. Coming to BLS International, definitely it is one of the second largest visa company travel after VFS. So, but I believe there would be a good correction. Technically, MACD is going down. 240 is my target. The reason you rightly mentioned that winter, generally this is a season where spring admissions are taken up for outside studies. But with the immigration issues going on around the world, and recent conversation with a visa agent in Ahmedabad, many tourist visa also are getting rejected. So right now, I think people are cautious of moving out. So I don't think we will see the same amount of traveler inquiries in visas. So avoid BLS for fresh position around 240. We will review it and invest again. Okay, fair point. Let's take another one. This one is from Vinita Bhansali. He, says, hi sir, can I invest in Rico Auto at the current levels? We do know from last couple of weeks, we've been seeing a lot of momentum in both the auto frontline stocks as well as auto ancillaries on the back of the festive demand as well as the GST cuts. Rico Auto, how have you seen today? There is a sharp decline of 3.7% at 97.7. Is there any reversal in sight? Yes, definitely. Today is the third trading day. We are witnessing a closing and trading below 10-day and 5-day moving average, which is a short-term barometer, general barometer. So
Of course, we are seeing some weakening. Secondly, yes, auto sector has seen a rise in sales number. But Sakshi, well, since the announcement was done of the GST reforms, deliveries and were on hold, and people were waiting for 22nd September. So I think this week's sales numbers are just a jump. I don't think so. We need to wait for quarterly average sales. So maybe December quarter would be what I'm looking for. So until Jan, I'm not going to invest in auto stocks at current levels. I will wait for GST refund numbers and sales number, because we need to see actually GST has been refunded and is there any actual savings or not. Okay, fair point. So I hope this has also truly helped you out. Let's take the next one. This one is from Vinita Gupta. She says, good afternoon, Sakshi. Please suggest a target and stop loss from Kush sir on Hind Copper. And I also want to know about Samvardhan Motherson from the auto space for next 3 to 6 months space. So let's discuss both these spaces. We've discussed a tad bit on the auto ancillary pocket. From the same pocket, she wants to know about Samvardhan Motherson and Hind Copper. Today it's up by about 5.8, 5.9% odd on the back of copper prices surging. Your sense on both these stocks, Kush? So, starting with Hin Copper, I think overall, I believe Hin Copper is in a strong momentum. We can see a good upside on the 344 level with the stop loss of 304. So, Hin Copper is looking very good. Coming to Mothers and Sumi, I mean, Mothers and Sumi is like buy and forget it. Definitely for short term, I won't recommend, not for 3 to 6 months. But if you have a horizon of say 5 to 6 years minimum, Mothers and Sumi is a stock where you can make your worth net worth multi-bagger. So if someone doesn't know, if you want to read an interesting story, if you are invested at least 10,000 in the IPO of Mothers and Sumi, today that 10,000 would have been minimum 25 crores. Absolutely. So I hope this is also clearly given you a sense. Let me actually go across to seeing some more questions now. This one is from one of our other viewers who's joining. In fact, we'll also bring in some WhatsApp related queries that are coming in. A lot of our people are joining in there. Sandeep says, good afternoon, Sakshi. Can I purchase Orient Cement at the current levels? It has been consolidating, but is it over? And it has not even crossed 10 EMA. What is the future outlook on Orient Cement? Kush, for you. Definitely, future outlook seems a little bit timid from here, current levels. I think, when other cement stocks are making new highs, this stock is trading near the 50-week, 2-week low. So I am a little bit cautious, and, currently the scenario in the cement sector is that, larger players are acquiring smaller players. So yet, we have not seen any such positive news for the Orient Cement, and stock has been in same range for almost last 3 years. Downside 225, upside 360. So currently we are near to downside moment support. If we break 226, we may see further downside. So avoid Orient Cement. If you are invested, exit and maybe shift to say Ambuja Cement or Ultratech. Okay, fair point. Let's take another question. We have this one from Momita from Kolkata, one of our regular viewers. She says, good afternoon, Sakshi. Good afternoon to you, Momita. How are you? Says, I have Bajaj Finance for last 1.5 years in my portfolio. My buying price is 672. And I can actually hold this stock for as long as it is recommended, even though I'm sitting on profits. But my other stock is LG Equipment at 563. That's for a short term duration. So I would seek an advice on both. Bajaj Finance, can I continue to keep on holding for long term? And LG Equipment, what should my strategy be on at 563? I think LG equipments. I think this momentum is on the downside, and we are seeing selling pressure on every rise. So for LG, I would recommend to be hard on yourself and book losses. Maybe wait, sit on cash, and maybe after some correction in the markets, we can enter frontline stocks, which will get a discount. Maybe IT sector or FMCG, where you can recover your loss. So in LG equipment, just exit. Bajaj Finance definitely looks very interesting for next 2 to 3 years, but I believe you should keep booking profits, because in NBFC space we are facing too much competitions of new entrants, and even banking sector, where they have also started focusing on
MSME loans and small loans. So definitely they have advantage, but I think now slow and steady economy is slowing down with the issues of say hike in salaries and new employment. I think this loan growth will have a pause. So you should book profits and buy again near around 900. Okay, fair point. I hope this has also truly helped you out. Let's take another one. This one is from one of our viewers. Sumuk from Bangalore says, I'm holding Crompton Greaves since 2 years and I need a feedback as to whether this stock can continue to be held on to and whether there is a continued upside that you see on this share as well. So, let's try and understand. On Crompton Greaves, 296 is the current level and his purchase price has been 310. So, slightly lower from his purchase price now. So I think you should exit the stock, Sakshi, because I'm just looking at the charts. In 2020, it was around at 480. So and Nifty was at around 10,000 after the COVID. So today Nifty is at 25,000. Your stock is at 280. So it has halved while your Nifty has performed double. So you are four times lower, approximately one fourth. So I think stock is not even coping up with benchmark, nowhere near to benchmark returns. So as an investment, I don't think you should hold on. Again, this sector is also facing a lot of competition from new entrants. So I think you should exit, and maybe I would suggest Finalex Cable or Havels, where they have a good product range, and they are increasing their product line, and it would be a safe bet. So Havels would be my preferred pick. Second would be Finalex Cable. Okay, fair point. Let's take another question. This one is from Sanjay Kumar from Hyderabad. Says, hello Sakshi ji, hello Sanjay, how are you? The question is on STL Network. He's bought the share at 30.43 levels, can actually hold for 3 quarters. 9 months odd or so, and wants your advice on this. Currently trading at 31.5, so he is in profits. Over the last maybe long term perspective, if we look at 6 months, the stock has risen by 44-45%. But again, remember, it's a low price stock, so we'll have to also look at the kind of volumes and trading activity that happens here and fundamentals, and whether it's also a technically strong stock to look at. Kush, what would your advice be here? STL Networks. Definitely, I think it's a newly listed stock, so I have a less data on my charts, and Yeah. fundamentally, I have not gone through in detail, so I wouldn't be the best person to comment. Okay. Let's take another one. We have more questions coming in. This one is from one of our other viewers who's joining in on our WhatsApp, Pradeep from Kolkata. Pradeep says, is it a good time to enter Shriram Finance? I think NBFC segment, as I said while we were discussing about uh, Bajaj Finance. I think NBFC will face some resistance on new loan growth, and this can be seen on the charts also. Sriram Finance, was trading in upside channel, but since last 3 days it has breached on the downside, and even all the short-term moving averages have been breached today. So if we close below 625 today, avoid an exit. I think we may test 540 on Sriram Finance. So I'm not a bit positive on NBFCs for next 6 months. Okay, let's take another one. This one is from Suresh from Bangalore. Says, hi, good afternoon. Good afternoon to you as well, Suresh. He says, is it the right time to buy EPAC Durable at the current price? Please advise. EPAC Durable has actually seen good times in the recent past as well. Investors have actually been able to make good wealth on EPAC Durable too. And now that the festive demand has again started on, your sense of how would this stock be able to benefit? I don't think so. I mean, charts are suggesting something else. I think 320 is on the cards. So avoid EPAC. Until and unless we are trading about 380, I don't think so. We are seeing any good momentum in the stock. So exit. We will review it around 320. Okay. Let's take the next one. This one is again from one of our other viewers. Okay, this one is from
Choti from Bokaro and says, I want to know about Spandana Sphurti. How are you looking at this stock at the current juncture? What is your outlook on this one? Again, I have not been tracking this fundamentally, but as I can notice, it is from again finance and rental and leasing sector, and the stock has came down from say more than 1,000 last year to just 260 right now. So the chart is itself an answer. Just avoid why you want to stick to this riskier stocks, which has not performed in last 1 year. Rather, it has Yeah. come down by 1/5. So suggest to exit and maybe invest in frontline banking stocks if you're not Okay. invested. Frontline banking stocks are better for you. Tekpal Bhatia says, could you please suggest to me, Kush sir, the current scenario on Timken India? How do you see the stock and its outlook going forward? Timken India. Timken India definitely further again stock is looking weak today. All of the charts are turning around to the south. Yes. So again exit the last rally which we have witnessed in Timken in last 3 weeks was just a bit of correction. So exit with a stop loss of 3,025 on the upside. We may first reach 2,800, below which 2,400 is definitely coming if we could not sustain about 2,800. Okay, let's take the next question. This one is from Vipul Agarwal. He's from Ahmedabad and he's holding a fertilizer stock, National Fertilizer, in his portfolio. 2000 shares is what he has, priced at 98 levels, and now wants to know what is the outlook on this one. Well, the above normal monsoons is what we've seen this year, but in many parts, we've seen a lot of floods and fury because of unseasonal rainfall as well. How would you look at, therefore, the fertilizer space? Definitely, I'm a little bit bearish from fertilizer space from current levels. I think the season is over, and you rightly mentioned, with floods and stuff. I don't think so. We are going to see same amount of top line on the all this sector. Same thing can be witnessed on the charts also. Today, NFL is trading at 2 3 weeks low. So I would better suggest that you are near to stock is near to your cost price. So book profits and sit on cash. That well, let's also take another question that's coming in from our viewers again. This is Amit. He says, I'm holding 25 Titan shares in my portfolio since last 1.5 years. My buying price is 3,417. I want to know, should I hold or sell? Well, gold prices have actually had an unstoppable run over the last 1 year and even the year before as well. And we've actually seen the gold prices shine bright, which have pulled up a lot of liquidity from the jewelry related stocks to direct bullion to ETFs or maybe to physical gold. But what's your sense with the festive season picking up? Titan is representative of from jewelry to eyewear kind of a space. Any suggestion on whether there will be any pickup seen? Definitely, I don't see any pickup in the retail scale, but no one would dare to buy jewelry at current levels for just for luxury or only if there are weddings or stuff we may see some buying. But I believe Titan is a good long-term stock. I'm sure he's holding since 1 year, so he's a long-term investor. We will average it out. Let's wait for some. Pullback in gold prices. I believe looking at the gold charts yesterday, I think we have made a near-term top, and gold prices might correct in international market with 5 to 7% before Dhanteras. That's my prediction. So before Dhanteras, maybe we will take a call. If gold prices have corrected as I expect, then definitely we'll buy Titan before Diwali, and then you can enjoy your Diwali break. Fantastic. Okay, Kush, towards the end, any stock ideas from your side? Definitely, if you are a short-term trader and risky player, just short-term. So two sell calls. One is on Reliance Industries. Stop loss would be 1,410. Target 1,300 and below which 1,280 for the October series. And second is TVS Motor. Again, I believe auto stocks will correct with high volatility. So if you are only a high volatile player, definitely short TVS Motor. Stop loss 3,500. Target around 3,100. Please note that for both these stocks are positive for long-term investors, so investors shouldn't exit. This is purely for trading perspective.
Much, Kush, for being with us on the show and for addressing all the queries of our viewers and, of course, suggesting to them sell ideas as you believe the markets are going to be weak in the near term. So, all those people who love to take short positions, those are the specific ideas that Kush has shared. Thank you so much, Kush, for being with us. All right, viewers, we'll now jump into a conversation with another guest who will be taking up your questions, another favorite on daily calls, and that's Raghavendra Singh, also known as B Prak of Stock Markets, and he's joining in on the program. Warm welcome to you, Raghavendra ji. How are you? Very good morning, Sakshi. Very good afternoon. I'm very good. Thank you so much for calling on your show. It's been a pleasure to have a conversation on your show. थैंक यू राघवेंद्र जी, बाजार कैसा लग रहा है आपको? कुछ आपसे पहले आए थे, उनका तो मानना है कि अभी और वीकनेस बढ़ेगी बाजार में। आप क्या देखते हैं इस बाजार में? क्या डिप्स को बाय किया जाएगा? 25,000 तो आज नीचे की तरफ टेस्ट हुआ है। साक्षी, देखिए बाजार जो है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म का टॉप बनाया है। पिछले एक हफ्ते से देखिए आप थोड़ा सा रेड में क्लोजिंग है, बट मुझे नहीं लगता बिकॉज ये एक्सपायरी का प्रेशर है। बिकॉज आप देखिए स्टार्टिंग के 15 दिन 20 दिन बाजार एक साइड से ऊपर था। हम 24,400 से लगातार 25,500 गए, तो ये एक्सपायरी का प्रेशर है। मुझे लगता है कि ट्यूसडे तक ये रहेगा पेन, और मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी के बाद एक बहुत बड़ा जंप जो है, मुझे लगता है दिवाली की रैली स्टार्ट होगी और हम 26,000 की ओर जाएंगे। निचले स्तरों पर मुझे लगता है 24,800 24,900 जो है एक ये बेस है, और मुझे लग रहा है एक्सपायरी भी कहीं 25,000 के आसपास होनी चाहिए अगले हफ्ते। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 55,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे। लेकिन मुझे लग रहा है ये एक्सपायरी का प्रेशर सकती है, और बहुत ज्यादा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक या ऐसा बहुत बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जिसकी वजह से बाजार नीचे है। इट्स कंप्लीटली एक्सपायरी प्रेशर, और मुझे लग रहा है कि शायद रिवर्सल एक्सपायरी के बाद बहुत तेजी से आएगा। Okay, got that. Let's also now start taking some questions, Raghavendra ji, and we'll come back to your choice of stocks as well. A lot of newer people are also joining in to share with us their questions and seek your views. We have this question from Kamlesh Narkhede. लिखते हैं, हाय साक्षी जी, हाय राघवेंद्र जी, टाटा मोटर्स बताइए लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए या फिर अभी रुक जाएं, और जब डीमर्जर होगा, कमर्शियल व्हीकल्स अलग से लिस्ट होंगी, तब खरीदना चाहिए। ये आपसे जान रहे हैं। आज तो 3% तक के आसपास की जो वीकनेस आई है, इसका असर सीधे तौर पर JLR के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ है उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो प्रॉफिट से भी ज़्यादा पड़ रहा है। उसको देखते हुए एक वीकनेस आ रही है टाटा मोटर्स में। आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप इस शेयर को? लगातार कंसोलिडेशन में है। बिल्कुल सही बोल रही हैं साक्षी आप देखिए जीएसटी कट के बाद जितने ऑटो स्टॉक थे सब ऊपर गए एक्सेप्ट टाटा मोटर। तो कुछ तो प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या इशू है वो तो मैनेजमेंट जानता है। मेरे हिसाब से अभी ये स्टॉक में बहुत बड़ा कोई अपसाइड नहीं है। मुझे लगता है कि डिमर्जर तक वेट करना चाहिए इनको। सर आप वेट करिए, डिमर्जर के बाद एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद एंट्री करेंगे। हो सकता है कि 600 रुपए के नीचे आपको जो है डिमर्जर के बाद वाली प्राइस जो है यहाँ से 50-60 रुपए नीचे मिले, वो ले लीजिएगा। नहीं होगा तो डिमर्जर के बाद आपको अच्छे मिल जाएंगे रेट, वो देखते हैं। बट मेरे हिसाब से थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। ठीक है, वेट करिए अभी, ये आपके लिए राय दी गई है। उमेश हैं दिल्ली से, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून साक्षी, आई बॉट प्रीमियर एनर्जीज एट 1064। 6 महीने तक के लिए ऑल होल्ड कर सकते हैं राघवेंद्र जी, व्हाट शुड आई डू? देखिए प्रीमियर एनर्जी जो है ऑलरेडी ये स्टॉक काफी दिनों से जो है एक अपस्टेज में है, और ये अपसाइड में था। अभी यहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग आई है, और ये स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल इसको, मुझे लगता है आपको यहाँ से जो है इसको बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस, तो आप इसमें 990 का स्टॉप लॉस दीजिए सर, और ये स्टॉक 1200 तक जा सकता है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये अश्विनी पाहवा का सवाल है, देहरादून से हैं, रेगुलर व्यूअर है हमारे। गल्फ ऑयल के ऊपर पूछना चाहते हैं। 1239 पर खरीदा हुआ है ये, और इसके बारे में एक लॉन्ग टर्म व्यू और टारगेट भी आपसे जानना चाहते हैं। गल्फ ऑयल देखिए अभी स्टॉक जो है 1350 से रिवर्सल दिया है इसने, और ये स्टॉक अभी 1200 के आसपास घूम रहा है, और निचले स्तरों पे 1190 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अगर आपको बाई करना हो तो 1210 1220 ये रेंज अच्छा है, वहां पे आप बाई कर सकते हैं। 1190 का स्टॉप लॉस दीजिए, और स्टॉक जो है 1320 तक जा सकता है इमीडिएटली। ओके, फेयर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं।
हमारे पास एक और सवाल आया है और ये भी हमारे एक रेगुलर व्यूअर का भी है इस लिस्ट में, जो कि हमारे लगातार से व्हाट्सएप के ज़रिए आ रहे हैं सवाल। जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है रतन लाल एंटरप्राइजेस को लेकर। सुनील बेनीवाल का ये पूछते हैं, इनके बाइंग प्राइस है 59, रतन लाल इंडिया एंटरप्राइजेस, इस शेयर को आप कैसे देखते हैं? रतनलाल इंडिया एंटरप्राइजेज, आप देखिए स्टॉक जो है अभी 50 रुपए के आसपास है और मुझे लगता है 65 रुपए से स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है, तो निगेटिव जोन में है। बट अभी सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो वॉल्यूम नहीं है नीचे आने में, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा रिस्क यहाँ से ले सकते हैं। 52 रुपए के आसपास आए तो बाई करिए। आप जो है 51 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 1 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ से भी अगर आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए के स्टॉप लॉस से। और एक मुझे लगता है मैम कि ये 58 और 62 रुपीज तक जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिहंत योगी का, लिखते हैं इट्स अ वेरी यूजफुल शो फॉर अस, थैंक यू सो मच अरिहंत फॉर राइटिंग इन अप्रिशिएटिव वर्ड्स फॉर डेली कॉल्स। द क्वेश्चन इज दैट आई हैव IOL chemicals at 115, can I hold or sell or should I average also? Please advise me on the same IOL chemical. नहीं, मुझे लगता है इनको एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक अभी 112 के आसपास है। अगर ये 110 का लेवल ब्रेक करेगा 110, फिर ये मुझे लगता है 98 के आसपास जाएगा, वहां एवरेज करेंगे। बट अभी फिलहाल 110 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए, एवरेज करने की राय नहीं। ठीक है, एवरेज करने की सलाह आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नानू व्यास का सवाल, ये लिखते हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। और लिखते हैं कि सेजिलिटी या फिर विशाल मेगा मार्ट, इन दोनों में से कोई एक शेयर चुनना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा चुनना चाहिए? दोनों शेयर अलग अलग उसमें है। मुझे लगता है कि सेजिलिटी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं वो एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे सकता है, तो सेजिलिटी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको 70-80 रुपए का भाव दिखेगा, ये ले लीजिए। विशाल मेगा मार्ट डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छी है, ईस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न यूपी में, न्यू दिल्ली, ये सब एरिया में, बिहार में इनका बहुत बड़ा एक प्रेजेंस है, बहुत बड़ी कंपनी है। और सबसे अच्छी बात है कि मार्जिन बहुत अच्छा है इनका। तो अगर आपको रिटेल में जाना है तो विशाल मेगा मार्ट 175, 180 के लिए ये भी आप बाई कर सकते हैं। ठीक है। चंद्र सिंह जी का सवाल है, लिखते हैं राघवेंद्र सर, थैंक यू फॉर कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, प्लीज डेली कॉल्स में डेली आया करिए, ये आपके लिए उनका कमेंट है। और लिखते हैं कि सर BSC को प्लीज बताइए कि BSC में क्या करें, मेरी एवरेज बाइंग 2161 की है, अब क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हम लोगों ने कई बार इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया भी है चैनल पे, तो हर बार यही निकल के आता है कि स्टॉक जो है स्प्लिट होने के बाद, मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा उसमें फॉल आता है। वी हैव टू वेट पेशेंटली। मुझे लगता है 6-8 महीना वेट करना पड़ेगा आपको। 2050 के आसपास है, बिल्कुल आप इसमें से घबराइए मत, बहुत नीचे आएगा तो ये मुझे लगता है 50-60 रुपए और नीचे आ सकता है। आप इस स्टॉक को ऐड कीजिए, क्योंकि ये पहली बात तो एक्सचेंज की कंपनी है, BSE NSE अभी लिस्टेड नहीं है, BSE से लिस्टेड है। तो 2000 का स्टॉक दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए 2150 के लिए। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये है संजय जैन का क्वेश्चन, ONGC के ऊपर पूछना चाह रहे हैं और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के ऊपर भी। ONGC खरीदा है 252 पर और 5 स्टार बिजनेस खरीदा है 720 पर। 6 महीने तक का व्यू आपसे जानना चाहते हैं दोनों ONGC और 5 स्टार पर। ONGC देखिए 240 के आसपास है। आपने अगर जो बाई किया हुआ है तो स्टॉक में जो स्टॉक को होल्ड कीजिए। और अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से जो है नई ऊंचाई पे जा सकता है। अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है स्टॉक में 230 के ऊपर, तो 250 तक का बनता है टारगेट। 234 आप दीजिए स्टॉप लॉस। और इसके बाद 5 स्टार बिजनेस लिमिटेड स्टॉक देखिए कंटिन्यूअस एक नेगेटिव जोन में है विद गुड वॉल्यूम, तो मुझे लगता है कि 5 स्टार में थोड़ा सा और जो है यहाँ से प्रेशर बना रहेगा। बट एक अच्छा लेवल है बाई करने का, बेचने की राय नहीं है। 500 रुपए के आसपास है, इसको ऐड कीजिए। 600, 650 रुपए तक ये स्टॉक इमीडिएट जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। दिस इज नैन्सी फ्रॉम चंडीगढ़। ही सेज थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग राघवेंद्र सर, प्लीज आस्क हिम, आई हैव 7% प्रॉफिट इन प्रीमियम एक्सप्लोसिव्स एंड इवन इन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, दोनों में एग्जिट कर लूँ या फिर अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकती हूँ? प्रीमियम एक्सप्लोसिव्स और दूसरा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज।
देखिए मैम, प्रीमियर एक्सप्लोसिव जो है ये मुझे लगता है स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का। डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर ये स्टॉक 570 के नीचे जाएगा तभी बेचना है। 570 का आप स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक को छोड़ दीजिए, इसको बेचना ही नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको ये 850 रुपए का भाव दिखाई देगा 6 से 8 महीने में, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए अभी इसको जो है। दूसरा स्टॉक इनका कौन सा था? दूसरा जो इन्होंने पूछा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर है, इसमें भी कह रही हैं कि प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन अभी क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टरलाइट टेक्नोलॉजी मैम, अगर आप और ऐड कर सकती हैं तो ऐड कीजिए। 124 के आसपास है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 165 का बनता है टारगेट अगले 6 महीने में। ओके, गॉट दैट। एक हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं और लगातार अपने सवाल भेज रहे हैं। राजू तिवारी हैं। राजू जी, आप एक बार भी लिखेंगे सवाल तो मैं डेफिनेटली आपका सवाल ले लूँगी, आपको इतनी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेंट इंडिया के ऊपर इनका सवाल है और ये पूछना चाह रहे हैं आपसे इसमें क्या पोटेंशियल डाउनसाइड है। पिछले एक महीने में 7-7.5% नीचे गया है और ईयर टू डेट 44% ऑलरेडी ये नीचे आया है वेंट इंडिया लिमिटेड का जो शेयर है। और अगर आप इसे देखेंगे तो एक अपसाइड हमें देखने को मिली थी 2020 से, तो एक तरफा ऑलमोस्ट मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट डिप आया था वो शायद 2024 में आया था, वहाँ से भी काफ़ी ये इम्प्रूव हुआ। और अब यहाँ पर बताइए कि किस तरीके से आप इस शेयर को देखते हैं। वेंट इंडिया लिमिटेड देखिए, स्टॉक जो है अभी एक नेगेटिव जोन में है और स्ट्रक्चर बहुत खराब है पिछले आप देखिए 1 से 2 साल से। तो मेरे हिसाब से स्टॉक जो है मंथली चार्ट पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल ये एक बार 8,500 8,600 आ सकता है, तो उसके लिए वेट कीजिए। अभी इमीडिएटली कोई ऐसा स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक में इमीडिएट एंट्री की जाए। बट मेरे हिसाब से 8,500 का लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल है बाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल लेते हैं। हमारे पास आया है एक हमारे व्यूअर हैं व्हाट्सएप के ज़रिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इनका सवाल है कि एसएमई आईपीओ स्पेस से संपत एल्यूमिनियम का एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ था इनको, और अब ये कह रहे हैं कि अब मैं स्टक फील कर रहा हूँ क्योंकि लगातार ये शेयर जो है लोअर सर्किट में है, अब मुझे क्या करना चाहिए। राघवेंद्र जी, अक्सर इसीलिए आपने देखा भी होगा सचिन जी कि टीवी चैनल्स पर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स पे एसएमई आईपीओस ज़्यादा कवर किए भी नहीं जाते हैं, और अगर किए भी जाते हैं तो वो एक काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लेमर्स डिस्क्लोजर्स के साथ किए जाते हैं। कोई न्यूज़ फ्लो ऐसा आया होगा जिसमें आपको ये बताया जाता है। मैक्सिमम फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी, ब्रोकरेज फर्म्स भी एसएमई आईपीओस को कवर नहीं करती हैं। उसका एक कारण है कि इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। राघवेंद्र जी, कैसे आप राय देंगे इनको संपत एल्यूमिनियम एसएमई में जो अलॉटमेंट मिला है? देखिए, एसएमई आईपीओ में मैं पहले भी कई बार हम लोग बोल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये आईपीओ ऐसे होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर ट्रैप हो जाता है, ना उसको एग्जिट मिलती है, ना उनको सही ढंग से कोई राय मिलती है, ना टेक्निकल है, ना कंपनी कुछ फंडामेंटल है। तो मेरी राय यही है कि सर ऐसे शेयरों से दूर रहें। आपको एनएससी में मेन बोल्ट पे आपको अच्छे अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं। अगर आपको एल्यूमिनियम में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो बहुत ही कंपनियां हैं जो उसमें डील करती हैं। आप सेल में जाइए, आप जो है हिंद कॉपर में जाइए, आप टाटा स्टील में जाइए, हिंडाल्को में जाइए, बहुत सी मेटेरियल कंपनियां जो 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 मेन बोल्ट पे है, तो वो मुझे लगता है कि वहां पे करना चाहिए। ऐसे एसएमईज में निवेश करके पैसा फंसाना नहीं चाहिए, अवॉइड कीजिए इसको। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको राय मिल गई होगी। आगे जब भी आपका मन करे एसएमई अलॉटमेंट के लिए या आईपीओ में निवेश करने के लिए, प्लीज़ एक फंडामेंटल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेकर ही आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिस्क होता है जिसके बारे में अक्सर राघवेंद्र जी जैसे गेस्ट हमारे चैनल पर सभी दर्शकों को आगाह करते भी रहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है अगेन यूट्यूब के ज़रिए, जो बहुत सारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं। गुंजन है, लिखती है वेरी हेल्पफुल शो फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, थैंक यू गुंजन। एरिस इंफ्रा के ऊपर इनका सवाल है, 165 पर खरीदा है, होल्ड करें या एवरेज करें, क्या करना चाहिए? ARIS, एरिस इंफ्रा। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, राइट जी। देखिए, ये एरिस इंफ्रा लिमिटेड जो है ये कंपनी 156 के आसपास ट्रेड हो रही है। देखिए, स्ट्रक्चर तो मैम बहुत अच्छा नहीं इसका है, मुझे लगता है इसको अवॉइड ही करो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टॉक जो है काफी मतलब काफी एक जो है बड़ा ब्रेकडाउन दे चुका है, 156 160 के नीचे। सर इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज फ्रॉम वन ऑफ आवर अदर व्यूअर्स।
हर्षित मंगल पीसीबीएल के ऊपर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक के ऊपर पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट भी आपसे जानना चाह रहे हैं शेयर पर। 395 की बाइंग है। स्टॉप लॉस इसका बनता है 385 का या 384 टू बी प्रिसाइज। आप इसको स्टॉप लॉस दे सकते हैं, और ये स्टॉक अगर 384 85 ब्रेक कर दिया तो फिर सीधा जो लेवल बनता है वो 365 का बनता है। तो आप अपने स्टॉप लॉस को चूज कर लीजिए। 410 का बनता है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट बनता है 430 का। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। दिस वन इज फ्रॉम विनोद चौधरी। ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून, कैन आई इन्वेस्ट इन ओसवाल पंप्स एंड पैराडीप फॉस्फेट्स? अगर 3 साल तक का होराइजन हो तो ये दोनों शेयर कैसे लगते हैं, ओसवाल पंप्स और पैराडीप फॉस्फेट्स? प्रदीप फास्फेट, साक्षी, मुझे याद है हम लोग 120 रुपए के आसपास आप ही के साथ शो में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कई बार कहा 120 140 हर एक लेवल पे कि प्रदीप फास्फेट आप ले लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, दिस इज माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट, और इसको आप होल्ड कीजिए जैसे हमने एक्सिगो में इन्वेस्टमेंट के लिए राय दी थी। प्रदीप फास्फेट अभी भी होल्ड कीजिए। मुझे लगता है ये स्टॉक 300 350 रुपए का भाव यहाँ से भी जा सकता है। आप इसके लिए इंतजार मत कीजिए कि रेट थोड़े नीचे आएंगे तब लेंगे, बट डेफिनेटली इस स्टॉक को आप इमीडिएट जो है बाई कीजिए और होल्ड कीजिए। 350 का टारगेट बनता है अगले 1 से 2 साल के अंदर, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जहां नीचे मिले इसको ले लीजिए। दूसरी बात, ओसवाल पंप देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है। ये स्टॉक लगातार 900 रुपए से नीचे आ रहा है और अभी 765 के आसपास है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कीजिए, 700 आएगा तो और जो है ऐड कीजिएगा। 680 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 950 का टारगेट अगले 2 से 3 साल में होता है। लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, एक और सवाल हमारे पास आया है और ये सवाल लेने के बाद हम तुरंत बढ़ेंगे आगे राघवेंद्र जी के पसंदीदा शेयर्स के ऊपर बातचीत करने के लिए। जो हमारे पास सवाल है ये है जियो फाइनेंस को लेकर। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ये शेयर अभी करंटली क्या निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। जियो फाइनेंस पे 300 के आसपास घूम रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि 200 रुपए के आसपास से जो है स्टॉक रिवर्सल लिया है और अभी 280 का स्टॉप लॉस दीजिए। स्टॉक को बाई कीजिए 350 340 ये लेवल आपको इमीडिएट जो है मिलना चाहिए। ओके, फेयर पॉइंट। राघवेंद्र जी, अब ये बताइए कि आपकी पसंद क्या कहती है बाजार में करंटली फेस्टिव सीजन में? आप खरीदारी क्या रियल बाजार में कर रहे हैं या फिर शेयर बाजार में कर रहे हैं? दोनों जगह हो रही है खरीदारी। साक्षी जी, मुझे लगता है कि हम ये एक बहुत बड़ा जो है जीएसटी कट के बाद लोगों को जो रिलीफ मिला है और जीएसटी के बाद जो पैसे बच रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर में जा रहे हैं। तो आपको जो कार लेनी थी अभी उसमें आपके 4-5 लाख रुपए बच गए, तो मेरी एडवाइस यही है आपको भी कि आप भी सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जीएसटी का जो मौका मिला है इसको जो छोड़िए मत। और स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने बोला प्रदीप फास्फेट, वहां पे भी आप जा सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में दिवाली तक एक अच्छी खासी जो रैली देंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर आप बिल्कुल इसमें जो निवेश कीजिए। उसके अलावा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में मिस मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली में एक और बोनस जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है कि जितने पीएसयू बैंक हैं उनको मर्ज करके केवल 2 बैंक बनेंगे, एसबीआई या फिर कोई और एक बैंक बन सकता है। तो मेरे हिसाब से 2 बड़े बैंक बन सकते हैं। तो इसलिए पीएसयू बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना छोड़िए मत। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, ये सारे स्टॉक्स मिलके शायद एक बैंक बनेंगे। बाकी जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये सब स्टॉक जो हैं वो शायद हो सकता है कि आपको एसबीआई में मर्ज हो जाए। ओके, गॉट दैट। पीएसयू बैंक से क्लियर बड़ी थीम बनती हुई नजर आ रही है, तो इसे आप बिल्कुल मत छोड़िए। अब वक्त है आईपीओ स्पेस के ऊपर भी चर्चा करने का। सभी दर्शक जानते हैं कि ये हफ्ता सबसे बिजी रह रहा है अभी तक इस साल का। जिस तरीके से आईपीओ रश देखने को मिल रहा है, केवल इसी हफ्ते में 12 मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं और हर दिन कोई नया आईपीओ खुल रहा है, हर दिन कोई ना कोई आईपीओ बंद हो रहा है या नए नए लिस्टिंग्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्योंकि आपके लिए ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन नाहर जुड़ते हैं हर रोज़ और आपको बताते हैं कि कौन कौन से नए आईपीओस खुल रहे हैं। और उसके बाद राघवेंद्र जी से हम राय भी जानेंगे कि क्या इन नए आईपीओस में निवेश भी करना चाहिए या नहीं। पवन, ओवर टू यू। 3 न्यू आईपीओस ओपनिंग टुडे. So Sakshi, 2 new IPOs opening today, and we have already 4 issues closing today, and 3 ongoing other issues besides those. So a total of 9 investment opportunities from the primary markets for the investors. And let's talk about the 3 of them.
EPAC Prefab Technologies, and Jan Resource Recycling, which had opened on Wednesday, that means yesterday, and True Alt Bioenergy, which has opened today. So let's talk about these IPOs individually. EPAC Prefab Technologies, it will close on Friday, that is tomorrow, and it is a 500 crore IPO, and which includes a 300 crore of fresh fresh issues size, and the price band for this IPO is fixed in the 194 to 204 odd crores of 204 rupees, with a lot size of 73 equity shares. Retail investors will have a allocation of 35% in this IPO. And what does the company do? It is a pre-engineering building solutions and pre-fabricated structure maker like Interarc and Penar Industries, and it has garnered positive reviews from Anand Rathi, BP Wealth, Canara Bank Securities, Hem Securities, Reliance Securities, SBI Securities, and Ventura. Jan Resource Recycling, it is an recycling and manufacturer of non-ferrous metal products, including alloy ingots, copper ingots, and aluminium alloys. So this issue will also close tomorrow, that is Friday, and it's a 1250 crore IPO, which includes a 500 crore of fresh issue size, and the price band for this IPO is 220 to 232 rupees, with a lot size of 64 equity shares, and it has a buy rating, subscribe rating from Anand Rathi, BP Wealth, Canara Bank Securities, SBI Securities, Ventura, and few others. True Alt Bioenergies, which has the issue has opened today, and it will close for subscription on Monday, that is September 29th. And it's a ethanol's one of the biggest ethanol producers in India, and it is an 839 crore odd issue, which includes a fresh issue size of 750 crores. And the price band for this IPO is 472 to 496 rupees, with a lot size of 30 equity shares. So it has received positive views from Ventura, Android, BP Wealth, GEPL Capital, and Marwadi Financial Services. So these are the three IPOs that investors can look upon after the consultation from their personal financial advisors. Over to you, Sakshi. All right. Okay, thank you so much, Pawan, for sharing with us all that update. Coming back to Raghavendra ji now. Raghavendra ji, इतने सारे IPOs आ रहे हैं, आपकी नज़र कहाँ पर पड़ी और कहाँ पर आपने निवेश करने की सलाह दी क्लाइंट्स को? देखिए, अभी ये 3 आईपीओ में से हमने जो सबसे पहले जो उसको बोला वो बोला जैन और रिसाइकल। आप वहां पे जा सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छी कंपनी है, अच्छा उनका नेटवर्क है और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। दूसरा जो है वो ट्रू ऑल्ट बायो, ये जैसे कि हम जान रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग एथेनॉल की है और एक ही कंपनी है जो एथेनॉल बनाती है, जो लिस्टेड है अभी फिलहाल जो है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा नहीं है, 1 या 2 कंपनियां हैं, तो इसमें भी हम जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ई-पैक, अभी ई-पैक को मैंने सबसे आखिरी में रखा हुआ है, तो ये कंपनी जो है बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। तो ये रेशियो होगा सबसे पहले जैन, उसके बाद ट्रू ऑल्ट, देन उसके बाद ई-पैक। ये रेशियो में आप इन जो है तीनों आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। जहां पे भी पैसा मिलता है लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए आपको जैन रिसाइकल ये जरूर होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद जो है ट्रू ऑल्ट बायो जो कि एथेनॉल बनाती है, तो ये 2 कंपनियां आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आईपीओ स्पेस से भी आपको राय मिल चुकी है कि कहाँ पर आपको पैसा लगाना है। कंफ्यूजन आपकी काफ़ी हद तक दूर हुई होगी कि कौन से शेयर्स को सबसे ज़्यादा या कौन के आईपीओस को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड एज ऑलवेज सॉल्विंग ऑल द क्वेरीज ऑफ आवर व्यूअर्स एंड ऑफ कोर्स गेटिंग इन टच with all your fans also through this platform. Thank you so much, appreciate your time. Alright viewers, we'll wrap it up on that note. As far as daily calls is concerned, you have 87 point of a downtick. Still we are hovering below the 25,000 mark. Let's see how it pans out. Remember, it's the expiry volatility like Raghavendra ji pointed out immediately when he joined in as well. So let's see how the last 2.5 hours of trade also pan out today.